Good morning, everyone. If you are interested in taking psychology as an optional subject for UPSC, you are at the right place. Because in this lecture, we are going to discuss about the psychology, the definition of the psychology, and in the coming lectures also, we are going to discuss about the benefits that why should you take psychology as your optional subject, how it will help you in your civil service career as well, because this particular subject helped me in cracking this examination because my psychology score was pretty good, and because of that my selection happened. Hello everyone, once again my name is Prince Luthra, All India rank 577 from UPSC CSE 2014 batch, and in this particular very small lecture we are going to discuss about the psychology's definition. So हम लोग definition पढ़ेंगे psychology की और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि psychology आखिर होता क्या है. In the upcoming lectures we are going to discuss about the UPSC syllabus about psychology, what kind of questions come, how should you prepare, what kind of books you read, and your strategy also, and I'll also share my own strategy which helped me in cracking this examination. So without further ado, let's start. So psychology, what is psychology? So if you really see, there are two words, psycho and logy. Okay, just like any other subject, sociology, anthropology, there are two words, psycho and logy. The psycho, now the first part is psycho, that is psyche. The origination point is, or the origination Greek word is psyche. So psycho, that emerged from this particular word psyche, which means soul. Okay, and what about logy? It has come from the word logos, which means study. Okay, so psychology is basically nothing but the study of soul. Now that is the definition which was given in the very beginning. Okay, when the psychology as a discipline emerged, then this was the definition which scholars used to practice. But as the developments happen, जैसे जैसे काफी सारे नए scholars आने शुरू हुए, नई नई चीजें psychology में आने लगी, then it was realized that this definition is not complete in itself, and we have to enlarge and expand the area of psychology. अगर आज आप बात करेंगे, psychology is not merely study of soul, but we also study the group. We study individuals. We study dyadic relations. So in psychology, we not only study about the soul, we study about the groups, we study about the individuals, and we also study about the dyadic relations. Dyadic means relationship between two people, husband, wife, boss, या फिर कहें कि senior and superior versus junior, subordinate. जो senior subordinate relationships हैं, ये भी इन सब चीजों के अंदर पढ़े जा सकते हैं. So basically psychology के अंदर we try to study the group dynamics. We try to understand the behavior of individual as well as the behavior of the group. We also try to understand the dyadic dynamics, or how the relationships are panning out between two individuals. They may be the room partner. For example, you are taking UPSC coaching, you might be sharing your room with your partner. If you are staying in the college, then there might be somebody else who may or may not be preparing for this examination. If you are living in Rajendra Nagar or Mukherjee Nagar, you may be sharing your room with somebody else who is also preparing. So the kind of relationship you have, now that comes under this area of dyadic relationship. Okay, now let's say you are sitting in a coaching room. There are like 300 students in that coaching room. So that is a group, and how that group reacts, how that group behaves, that comes under group behavior. Okay, so what are we studying? We are studying about the group behavior. Means आप 300 लोग एक क्लास में बैठे हैं, आपके बिहेवियर को जब मैं स्टडी करता हूं, इट मींस साइकोलॉजी के अंदर मैं क्या स्टडी कर रहा हूं? आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ग्रुप बिहेवियर. जब मैं आपको इंडिविजुअली स्टडी करता हूं कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, हाउ मच टाइम यू आर गिविंग, फोकस लेवल क्या है, आपका फोन जो है क्या वो स्विच ऑफ है या स्विच ऑन है व्हेन यू आर स्टडीइंग, वेदर यू हैव पुट इट ऑन म्यूट, वेदर यू आर वाचिंग द नोटिफिकेशन इन बिटवीन. सो देयर आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर बिहेवियर ओनली, दैट इज द इंडिविजुअल बिहेवियर ओनली. ओके, डायडिक में व्हेन आई एम ट्राइंग टू स्टडी और व्हेन आई एम सीइंग और ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ टू पीपल, that might be you and your roommate, or maybe some husband wife, maybe subordinate and senior. Okay, so psychology is not confined to study of soul only, because we try to understand the group relationship, the individual dynamics, as well as the dyadic relationship. Okay, so ये चीज ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजी के अंदर हम स्टडी क्या करते हैं, बिकॉज दिस इज द सब्जेक्ट विच यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर नेक्स्ट 1.5 ईयर. सो यहाँ पे इसका वर्क एरिया क्या है वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, चलिए अब एक बात आती है कि क्या साइकोलॉजी साइंस है या नहीं है. द आंसर इज यस एज वेल एज नो. सो साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, दैट इज द फर्स्ट थिंग. सो वट एवर द बिहेवियर वी स्टडी,
we study that very scientifically, okay, but at the same time we cannot say it is a pure science. Reason is because unlike mathematics, unlike physics, chemistry, biology, the results might be different when the inputs are same. कैसे? देखिए, जब भी मैथ्स में हम बात करते हैं, if I ask you what is 2 plus 2, your answer will be 4. What is 2 plus 2? Again 4. अगर ये चीज मैं आपसे एक साल के बाद या एक महीने के बाद भी पूछूंगा, your answer will be 4, right? But let's say your name is Sumit and your friend's name is Amit. Okay, you are Sumit and your friend is Amit. You are meeting today, let's say at a mall. ठीक है, आप लोग बारबेक्यू नेशन जाते हैं, ओके, एंड यू हैव अ गुड टाइम. आप अच्छे से एंजॉय करते हैं, बातचीत करते हैं और वापस 2-3 घंटे के अंदर वापस आ जाते हैं. ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन यू हैड. लेट्स से आप आज से 2 महीने के बाद मिले सेकंड टाइम, सुमित एंड अमित. आप लोग बारबेक्यू नेशन जाते हैं, बट वहां पर ऐसी कोई बात होती है कि जो आपको पसंद नहीं आती अमित की, और आप क्या करते हैं, आप बीच में से उठ के ही चले जाते हैं. सो क्या आपको लगता है फर्स्ट टाइम का जो रिजल्ट था एंड द सेकंड टाइम रिजल्ट आर दे सेम? आंसर इज नो. इन मैथमेटिक्स रिजल्ट इज सेम whether you say 2 plus 2 today or maybe tomorrow, maybe after 1 year, result will be same. Result is same, result will be same, result was same. Reason is because it is a pure science. But psychology is not a pure science because inputs अलग हैं इसके. इसमें we try to study the human beings and human beings are very unpredictable. आज आप अपने दोस्त के साथ खुश हैं, कल लड़ाई भी हो सकती है और परसों फिर से दोस्ती भी हो सकती है. सो यू मे हैव गुड रिलेशनशिप टुडे, मे नॉट हैव द गुड रिलेशनशिप टुमारो, बट द डे आफ्टर टुमारो यू मे बी फ्रेंड्स again. Okay, so the subject matter of psychology is such. Subject matter, try to listen it very very carefully. The subject matter of psychology is such that it can never be a pure science, but yes, we are moving towards scientificity, you can say, or yes, it may not be a pure science, but yes, it is a scientific discipline. So you can say yes, it is a scientific discipline, but you cannot compare it with other pure sciences like mathematics, like physics, like chemistry. Okay, so I hope you understood this thing. So यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है. I told you and I taught you about psychology, psyche and logos. Please remember that psyche means soul, logos means study. It is study of soul, but we expanded the definition because nowadays we also study the behavior of individual, the group dynamics and the dyadic relationship. Okay, so in the group dynamics, the protest may be happening. So you will try to understand the people there, you will try to understand the group, that in this particular protest how the entire group is behaving. यूपीएससी की क्लास चल रही है, एंटायर ग्रुप किस तरीके से बिहेव कर रहा है ग्रुप के अंदर आएगा. इंडिविजुअली आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल के अंदर आएगा. डायडिक मींस आप और आपके रूम पार्टनर के बीच में रिलेशंस कैसे हैं, वो स्टडी करना है साइकोलॉजी के डायडिक रिलेशन के अंदर. देन हमने इसके बाद स्टडी किया था कि क्या ये प्योर साइंस है, और मैंने आपको इस चीज का आंसर दिया कि अनलाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इट इज नॉट अ प्योर साइंस, बट यस इट इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन बिकॉज वी ट्राई टू स्टडी द बिहेवियर साइंटिफिकली है. ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल ट्राई टू रीड, अंडरस्टैंड certain new aspects. Thanks for watching this video. Have a nice day. Take care. Goodbye.